Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our podcast From the Top, Inspiring Conversation. The sole idea of this podcast is to invite business and leadership profiles और उनसे जानें कि उनकी ज़िंदगी में लीडरशिप, वर्कप्लेस और वेलबींग किस तरह से डिफाइन हो रहे हैं. So जो आज मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं, सैयद उमर आरिफ, ही इज़ द MD ऑफ लिबर्टी पैकेजिंग. बहुत अच्छे प्रोफाइल हैं. आज इनसे जानेंगे कि ये लीडरशिप को किस तरह से देखते हैं और इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है. So Umar, thank you so much for being with us. The pleasure is all mine. To be very honest, when I started this idea, जो चंद लोग मेरे जहन में थे जिनको मैंने बुलाना था, you were amongst them. Just because of one thing, not because you are my friend, but because you are a risk taker and a go-getter. वो जो leadership की कुछ बातें हम define करते हैं कि vision भी हो और फिर कुछ करने की सलाहियत भी हो, that I know कि you are the best fit for that. Even I can recall my days when I was starting my training company. You were amongst the very few जिन्होंने मुझे inspire किया था, even push किया था कि फरहान अपना काम करें. So how is it? अभी तक कैसे चल रहा है? Oh my God, I can't tell you how satisfying that journey has been. See, if I remember correctly, जब हमारी उस वक्त भी बात होती थी, हम एक चीज़ पे हमेशा बात करते थे फरहान कि tough times create strong men and nothing good ever came easy. हम उसी तरह के लोग हैं कि हम कहते हैं कि we find something and we give full efforts. हम जहाँ पे भी कंफर्ट जोन में जाते हैं हम उससे कहते हैं we can't do it anymore because हमें लगता है वहाँ रस्टी होना शुरू हो जाते हैं. And then we embark on another journey. And that is I think we both have been doing for quite some time. हम मुख्तलिफ ventures किए हैं and alhamdulillah we've all been very successful at it because we don't want to be stagnant, rustic, and we just want our life to matter at the end of the day. So thank you so much. Umar, before I go into the details about listening your perspective on these topics, I would like to know about your personal background. Like, where did you study? How did you end up being the MD of this company? I think my bachelor's was from NED University. उसके बाद मैंने कहा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ना चाहिए. I went abroad. I studied in Canada. I got a CGPA of 3.99. Wow. उसके बाद पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन में भी रहा वहाँ पे. I got a job in Canada as well. लेकिन एक मसला था मेरे साथ जो आपको पता है पुराना मसला है कि I think I was getting too comfortable in life. जॉब मिल गई थी, शादी कर सकता था, everything right, but I have never like being comfortable with settling for anything less. और वहाँ मुझे सुनने को मिला कि to achieve something in Pakistan it's very difficult. अब that thing hit me. मैंने कहा क्यों भाई ऐसा क्या है? आपको पता है फिर मैंने टिकट कटवाया, जॉब पे भी मैंने ज़्यादा कंटिन्यू किया और मैं वापस आ गया. उसके बाद हम आए, उसके बाद मैंने मुख्तलिफ वेंचर्स किए, मैंने टेंडरिंग की, वेरी सक्सेसफुल. मैंने सेहतमंद मुस्तकबिल के नाम से हमने NGO स्टार्ट की जो कि नेस्ट जो कि गूगल का इंक्यूबेटर है, वहाँ इंक्यूबेट हुई, वो सक्सेसफुल रही, वो हमने एक साथ साथ किया. कॉर्पोरेट कंपनीज में काम किया, उधर आपकी मेरी सक्सेस का आपको अच्छी तरह आइडिया है. सो उसके बाद वॉट एवर आई बीन डूइंग आई वॉज एक्सेलिंग. मैंने कहा कि लेट्स डू समथिंग मोर. सो आई स्टार्टेड दिस कंपनी 4 to 5 years बैक, अ पैकेजिंग कंपनी. So I was a new kid on the block. उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह if I see down the line in 5 years we are working with the biggest names in the industry. हमें याद है कि दूसरे कहते थे कि you cannot work with this client because this client works with a company that is 40 years old. So again that challenge always kept me motivated and enthusiastic. मैंने कहा हो जाएगा. तो आज अल्हम्दुलिल्लाह we are one of the most respectable and one of the biggest name and one of the name that has the most potential in the industry. So again, what I just said like 5 minutes ago, take a challenge positively, never get in your comfort zone and keep on trying again and again and again for something better. So this is my background and this is the motivation that has kept me going throughout the years. Amazing. So मैं ये जो कंपनी बनाने का ख्याल इतनी यंग एज में वी अंडरस्टैंड कि अक्सर जो लोग हैं वो देते कि जी हम जब तक अपने 40s में या 50s में नहीं पहुंचते तब तक हम नहीं करेंगे. एट दिस यंग एज डिसाइडिंग कि जी अपनी कंपनी बनानी है, उसको खड़ा करना है. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? आई वुड इवन आस्क हाउ चैलेंजिंग वाज दैट एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट? It was challenging. It was very tough. There were times that I wanted to say, nah, very difficult. But then again, I know that you never give up. And my focus was on the end point. मुझे पता है कि even though the initial stages are very difficult, but if I conquer this, आगे बहुत फायदा है. So
The initial struggle, I was facing it, but my sight was at the very end. कि आज से 15 साल बाद इसका फ़ायदा बहुत होगा. तो मैं अपनी फार साइटेडनेस को सामने रखा हुआ था, एंड आई वाज जस्ट वर्किंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. और ऑलवेज रिमेंबर 2 थिंग्स. इट इज़ ऑलवेज हार्ड वर्क एंड फेथ. तो ये जो मेरा है ना, आई हैव केप्ट दिस वेरी क्लोज टू माई हार्ट ऑलवेज. आप काम करते रहें, आप काम करते रहें, हम काम करते रहें, एंड द वेरी मोमेंट जब आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं होगा, एंड देयर द फेथ फैक्टर किक्स है, और वो हो जाता है. और आज तक ऐसा हो रहा है, एंड आई एम एट इट, एंड आई विल कंटिन्यू टू डू सो. So please do not think that liberty is the only thing. Inshallah, you will see a group of companies very soon. Inshallah. And Umer, I can even consider this as an opportunity because जब मैंने ये podcast का idea शुरू किया तो इसका मकसद ये था कि इस तरह के लोग जो कि लीडरशिप और गो गेटा एटीट्यूड रखते हैं, जो कि वर्क प्लेस इवन जो जॉब क्रिएशन की बात करते हैं, आप जैसे लोगों को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि आप क्या समझते हैं कि लीडरशिप का रोल क्या है, वर्क प्लेस को कैसे होना चाहिए, वेलबींग को किस तरह से होना चाहिए. सो आई हियर नीड टू नो योर पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट डू यू थिंक इज़ अ गुड लीडर एंड हाउ वुड यू डिफाइन दैट. So, a good leader is one that does not micromanage, first of all. He gives the delegation, and if anything, happens negative, he does not hold the other person accountable. हमारे इशू ये होता है, हम डेलीगेशन भी दे देते हैं, लेकिन अब फिर उसको अकाउंटेबल ठहराने लगते हैं. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर गिविंग समवन ओनरशिप, यस इट कैन गो इन पॉजिटिव एंड इट कैन गो इन नेगेटिव. तो बी काइंड विथ योर टीम, बी हम्बल विथ योर टीम. गलती होती है, टेक इट एज अ लर्निंग कर, उसको समझाएं किस तरह होता है. तो ओनरशिप दें उसे और डेलीगेशन दें. तो और अगर आप डेलीगेशन देंगे उसे और अगर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम ओनरशिप नहीं लेगा. सो दीज आर द 2 थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. डेलीगेशन दें उसे और उसको ओनरशिप लेने दें उसके साथ, एंड स्टैंड विथ हिम. बिकॉज आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू आर ब्रीडिंग अ न्यू टीम, बिकॉज वी हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, इश्यूज होते हैं. पेशेंस आपको रखना है, बिकॉज यू आर द हेड ऑफ द कंपनी एंड यू आर द ग्रैंडफादर और द फादर ऑफ द कंपनी. तो आप पेशेंस रखें, give your team the opportunity, let them go through the learning curve, and inshallah it always turns out good. And I'm telling you this from my experience. We have faced a lot of struggle, but alhamdulillah it's all working fine. We have never changed anyone from our team. We have faced losses in millions, lekin we never kicked that person out. Aaj that person is the most valuable person of the company. उसने million डुबाए ज़रूर होंगे, आज उसने उससे ज़्यादा कमा के दिए. So stand with your team. And Umer, what is your personal leadership style? How do you manage, or how do you lead your team? How would you define that? I just mentor my team. I give them 100% ownership. I give them 100% delegation. If something goes wrong, so just like what I just said, कुछ भी गलत होगा, I'll take it on me. If we get a complaint from a client, मुझे पता है मेरे लड़के से ये गलती हुई है, लेकिन I'll take it on me. It is a shortcoming from my end. Maybe I was the one जिसने गलत टास्क असाइन कर दिया. Maybe my team wasn't ready for it. So be the big brother of your company, of your team. Nurture them, motivate them, train them, and never call out them if something is gone wrong, because that impacts their confidence and the willing to perform. And Umer, now I would like to know one story of your doing your own business. पिछले 5 साल में कोई ऐसा client, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी story, कोई ऐसा experience that you feel like you are most proud of? There are multiple, by the way. So there is a particular client of ours. It took us 3 years to develop the client. Oh my God! And because of a team member, we lost that client in 10 to 15 minutes. Oh my God! Again, that guy is now the most valuable member of our team. So we were very heartbroken. We were financially struggling and everything, but we did not give up. For one day, no one was talking to each other. We were literally hitting each other. But from the very next day, I came to office late. I was very badly motivated, but my team worked 24 hours. And I'm telling you 24 hours ऐसे नहीं कि वो बात कर रहा हूँ. They worked 24 hours. 7 दिन के अंदर उन्होंने क्लाइंट को कहा कि अप्रोच अस अगेन. And वो क्लाइंट आया, काम रिज्यूम हुआ, and now that client is one of our biggest customer. Wow. So again चीज़ देखें कि इसमें मैं तो मोटिवेटेड नहीं था. It was my team that worked 24 hours. वो जो सेंस ऑफ ओनरशिप आपकी टीम में एम्बेड हो जाए ना, then nothing can go wrong.
And Umar, because you started your own company, I just am wondering कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना काम करना चाहते हैं. When I remember my days, when I was deciding कि मैं अपना काम करूँ या ना करूँ, तो बहुत सारे fears होते हैं कि what if I fail, what if it doesn't work out, and what if के लोग मुझे जो है वो सही तरीके से perceive ना करें, मेरा business ना चले. So in your case, how was this? Fears थे or you were very much focused about कि नहीं हो जाएगा? See, at the end of the day, we are all human, right? And scare is a natural instinct. तो वो सब हमेशा होगा. अगर कोई कह रहा है कि नहीं होगा तो ऐसा, you will always be scared. But always remember it, across the fine line is success. Across the fine line is where you start making your life better. देखिए मुश्किल हमेशा आती है, but you need to be consistent. मेहनत करते रहें, कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड देन कीप फेथ, और फिर यू कैन क्रॉस एनी लाइन, यू कैन अचीव एनी टास्क. सो हार्ड वर्क एंड फेथ, आई ऑलवेज से दिस अगेन. तो जितना भी स्केयर है सब एड्रेस हो जाता है, लेकिन मुश्किलात ज़रूर आती है हमेशा. True, so true. I fully agree with you on this. And this two words combination, hard work and faith. I live by this. देखिए हमारे तो तकाजा है ना ईमान का, ये कि आप अल्लाह ताला सेज कि आप अपना पूरा एफर्ट करो एंड आई विल गिव यू. ठीक है, तो मेरे तो ऐसे ऐसे वक्त आए हैं कि मैं जहाँ ना बस मेहनत कर करके आई वुड लाइक पुट माई पेन डाउन कि अब नहीं हो सकता. आई एम टेलिंग यू दिस इज रियल स्टोरी. द सेकंड आई वुड पुट माई पेन डाउन, 2 मिनट बाद कॉल आ जाएगी, काम हो गया. एंड दिस हैपेंस टू मी, हैज बीन हैपनिंग टू मी सिंस फॉरएवर. सो दैट इज व्हाई आई थिंक अब मुझे डर नहीं लगता है, हो जाता है हर बार. And Umar, how do you see the industry or the economic situation of Pakistan? इसका असर जो हमारी especially business community है. It is tough and it is very challenging right now. But I think हमारी जितनी भी business community है ना, उसमें अब जितने भी लोग निकालेंगे तो everyone would be crying कि इंडस्ट्री ऐसी हो गई, इंडस्ट्री क्या हो गई. So let's be the one जो इसमें कोई पॉजिटिविटी निकाल लेता है. I think it is the good time कि हम अपनी जितनी भी inefficiencies हैं उनको आइडेंटिफाई करें. हम देखें कि हम अपना कौन सी न्यू मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने इस वक्त रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स किए, ठीक है, तो उन्होंने एक्सपोर्ट किया है तो उन्हें रिबेट मुल्क को भी मिला है. तो दीज टाइम्स गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई द गैप्स, रिव्यू द चैलेंजेस एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर. So I think these times are always necessary in the industry, and we have been doing good. Umar, एक बात जो कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि when you start your own business, that first initial years are of the hustling, and you forget about work-life balance, you forget about employee well-being. How do you think is that important? Like the difference between productivity and employee well-being? I think they're not different. I think they're very strongly correlated. अच्छा. See, productivity and well-being, that is employee well-being. Yeah. Always remember that. मतलब मैं इसको बातें नहीं करूँगा. I want everyone to understand this very clearly. Happy employee is a productive employee. आप अपने एम्प्लॉई को अगेन द वर्ड ज़्यादा यूज़ अगेन उसको प्रोडक्टिविटी और उसको ओनरशिप दें, उसको डेलीगेशन दें, उसके साथ खड़े रहें. वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो प्रोडक्टिविटी आपकी खुद ही बहुत इंक्रीज कर देता है. और सिंस आई ऑलवेज डन दिस विद माई टीम, तो मेरा वर्क लाइफ बैलेंस तो अच्छा रहा है. एंड दे हैव ऑलवेज मेड माई लाइफ वेरी ईजी. उमर, इस तरह के जो इवन आपकी इंडस्ट्री के जो हालात हैं, विच इज़ लाइक पैकेजिंग इंडस्ट्री, इसमें वो डू यू थिंक जो टेक्नोलॉजी का बूम आ रहा है, एआई का बूम आ रहा है, वो डू यू थिंक द इम्पैक्ट ऑफ एआई, स्पेशली द मशीन लर्निंग, इसका इम्पैक्ट आगे चल के स्पेशली आपकी इंडस्ट्री पर, हाउ डू यू लुक एट दैट? I think the impact of AI, the impact of technology, the impact of industry 2.0, we are in Pakistan we are very far behind words. लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि actually ultimately कि आप लोग की efficiencies increase होंगी. efficiencies increase होंगी तो आपकी product costing improve हो जाएगी. product costing improve हो जाएगी तो आप जिसमें कोड sell कर रहे होंगे, जो end product होगा वो cheap हो जाएगा. जब वो product आपको cheap हो जाएगा, जो trickle down होकर हमारी population पे जो impact आता है वो कम हो जाएगा. तो ओवरऑल आपको जो एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो डिक्रीज हो जाएगी. उसके अलावा आई डोंट हैव मच टू से ऑन दिस. And Umar, what are the leadership lessons that life have taught you besides this hard work and being faithful about what you do? इसके अलावा कोई ऐसा लेसन जो आप समझते हैं कि यार I keep these lessons very close to my heart?
I think when you start a company and when you're working from day one and you see all the struggles, तो आपको एक चीज़ को फिर बड़ा रियलाइज़ हो जाता है कि you're on the ground yourself, और the only key other than hard work and faith is be very humble and be very patient. The reason I say patient is कि मुश्किल वक्त आता है, अगर आप patiently उसको address नहीं करेंगे and you'll react, everything will fall down and collapse. तो हम कहते हैं वो patience is very important और humble रहना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, you do not, जब when you're on the top, you do not go and you kick the guy that kicked you at that time. Because please believe in karma, it doesn't work like that. You need to maintain a good cycle. So patience और humble होना बहुत ज़रूरी है आगे जाके. And one of your failure, I would ask you this way कि for example अगर कोई अभी अपनी packaging business unit लगाना चाहे and he or she comes to you and say उमर मुझे एक कोई बात बताओ जो मुझे नहीं करनी चाहिए while doing this business. So what would be your advice कि भाई सब कुछ try करो, ये मत करना because I have tried it and it didn't work. ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक आया. I haven't come across that way. But I've seen. But एक चीज़ मैंने मेरे ख्याल से 1-2 घंटे के लिए मेरे अंदर आई थी, वो जो first gist of success आती है ना, don't let them overcome all the effort that you've made. क्योंकि वो जो शुरू का success होती है ना, that is the crucial point. अगर उसको आपने अपने ऊपर हावी होने दिया ना, you'll fall. You need to be consistent. That's very important. वैसे लीडरशिप का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना सही है या हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस होके सिर्फ विजन और स्ट्रैटेजी की बातें करते रहें वो ज़्यादा बेहतर है? बट देन अगेन दैट वुड बी बीइंग अ बॉस. बातें करना एंड वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, दैट इज व्हाट अ बॉस डज. अ लीडरशिप इज अ गाय दैट स्टैंड्स विद हिज टीम. यू नीड टू स्टैंड विद योर टीम. आपने उनको ओनरशिप दे दी, डेलीगेशन दे दी, बट यू नीड टू बी स्टैंडिंग देयर सो दैट योर टीम नोज दैट माई so that the leader or so that the guy that is my senior is standing here with me, I'll give him my more. I'll give more to the company. होता क्या है, लोग बातें बहुत करते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हमारे टीम वाला रात के 12 बजे भी लगा होता है, हम घर पे सो रहे होते हैं, तो उसके अंदर सी इट्स द ह्यूमन इंस्टिंक्ट. वो कहेगा यार एट द एंड ऑफ द डे बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता. तो द बेस्ट थिंग आई थिंक जो मैंने की है, और मे बी वाई माई टीम हैज ऑलवेज बीन मोटिवेटेड, अगर कोई इशू आता है एंड इट्स रात के 1 बजे, तो आई जस्ट गेट अप इन माई शॉर्ट्स, आई सिट इन द कार एंड आई विल बी इन द ऑफिस, एंड दैट हैज़ ऑलवेज केप्ट माई टीम मोटिवेटेड एंड दे आर नेवर अफ्रेड टू कॉल मी अप एट 2 in the night as well. उन्होंने कहा कि मैं आ जाऊँगा एंड विल रिजॉल्व इट. एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ माई जर्नी एंड इट इज़ देयर जर्नी. और हम जब साथ में हाथ मिलकर काम करते हैं ना, एंड ओनली दैट इज़ द टाइम दैट वी कैन रीप आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स. And even I would like to know, how do you manage conflicts? I know कि because leading a team नीचे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती होंगी, disagreements, different opinions, conflicts. What is your strategy to deal with it? This is one of the most difficult questions I've came across. So initially I just tell them to we'll have this meeting again in an hour. ठीक है, वो तो उस वक्त the kettle is very hot. ठीक है, मैं कहता हूँ come back, we'll sit in an hour again. And what I do is कि at the end of the day I just remind them of the good memories that they have had together. And simply मैंने कहा कि यार उस वक्त भी तो था, ये भी तो था, ठीक है, it's part of work, हो जाता है. So I just try to like उनसे कहता हूँ अपने सारी चीज़ें याद करें of the good memories. और फिर they settle down, they calm down. So even I fully agree with you on this. मेरे जो life coaching के मेरे coaches आते हैं, clients आते हैं, so when something happens to them they immediately call me कि यार ये हो गया है, मुझे बताएं क्या करूं. So पहले तो मैं उनको सारा सुनता हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ जब डिस्कस हो जाता है तो now they are eager to learn कि जी अब क्या किया जाए. ऐसे इस पे 2 दिन के बाद बात करेंगे या 1 दिन के बाद बात करेंगे. Then your sense comes in. Yeah, so ऐसे अभी क्योंकि immediate उस जो बात हुई है उसका असर है आपके ऊपर. अभी आप सिर्फ एक state of mind में ही रहकर सोचेंगे. So I even give them an example कि what would you expect from a guy जिसका अभी फ़ोन छीना हो, right? And आप उससे कोई भी सवाल पूछेंगे, he won't be in his senses. तो अच्छी चीज़ ये है कि जब उसका असर ख़त्म हो जाए, उसके बाद we should come and talk to him. Yeah. And now before I move on to the final round, which is rapid fire round related to leadership, workplace and well-being. One thing that again besides hard work and being faithful, कौन सी ऐसी एडवाइस है जो आप यंग प्रोफेशनल्स को देना चाहेंगे, नॉट ओनली एंटरप्रेन्योर्स बट वो लोग जो काम कर रहे हैं, वो जो लोग किसी कंपनी में काम करना चाह रहे हैं,
how to become a good employee in that sense, or how to become a good team member, what would you say on this? Be honest with your work, keep working hard, stay faithful to your work, stop comparing yourself to others. I think इस तरह Facebook पे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आती है कि you can't compare an elephant and a banana when climbing a tree, and it's very valid. ठीक है? It's not necessary that if you're very good at training, I'll be very good at training as well. So it's your responsibility and it's your supervisor's responsibility to साथ बैठे हैं सोचें what is the best thing about you. और उसमें लगे रहें, काम करते रहें. Keep your head down, don't compare yourself, and inshallah you'll be successful, and that is the key. Right, Umer, thank you so much. And now just we are moving forward the rapid fire round, और इसमें 3 rounds हैं. So one is about this or that. I know कि हर चीज़ की situation और context अलग होता है, but I would like कि अगर आप कोई सिर्फ एक ही चीज़ pick This or करें. that. So are you ready? Yes. So Bill Gates or Elon Musk? Elon Musk. Okay. Vision or execution? Execution. Okay. Innovation or efficiency? Innovation. Okay. Transparency or privacy? Transparency. Collaboration or individual work? Collaboration. Short term or long term Long thinking? term always. Risk taking or playing it safe? Risk taking always. Oh my God. Always. I can vouch for that as well for you. Result or process? Process. Okay. And top down or bottom up leadership? Top down. Okay. Data driven or intuition based decisions? For me, Yeah. intuition based. Okay. Resilience or adaptability? Resilience. Okay. Money or passion? Money or patience? Money or passion? Passion. Money comes with it. Okay. Okay. So your pick is passion. Oh yes. Okay. So now here are some favorites. ठीक है जी? So your favorite productivity tool? Options are Options are कोई भी productivity tool, like you can use like scheduling, delegation, even that you said. planning. Okay, good. Yeah, even I know your planning skills. Favorite way to de-stress? How do you do that? How do I do that? I don't de-stress. The favorite way to de-stress is I'll go on a long drive. Okay, what is your favorite social media platform? Instagram. Okay, and what is your favorite culture value? Value that can you consider very close to your heart कि company में होना चाहिए. The respect for your elders and the kindness to your young. Wow, good. And the favorite thing about your job? That I can take a decision without seeking anyone's permission. Okay. And favorite way to celebrate success? Call your entire teammates, set up a table in the center of the production floor and cut a cake Wow. and make fun of each other. Good. And now finally, these are some fill the sentence. You have to, fill all these sentences. So now here we start. And it says the best way to improve workplace culture is? Start from your own self. Okay, good. The biggest challenge facing leaders today is? They are too afraid to take risks and delegate and give ownership to their team members. Love it. The best advice you have ever received? Do not think of the failures that have already happened. Think of the next step. Good. Your proudest accomplishment is? Making my parents proud Okay. of everything that I've been doing. Good. In your free time, you like to? Drive. Okay. Yeah, I know. Baselessly drive. आपके सारे plans यही होते हैं कि कभी शक्कर चलते हैं तो कभी जो है वो कारो चलते हैं. Yeah. The biggest challenge you faced in your career was? What the biggest challenge that I faced in my career? That particularly the packaging industry. So Yeah. there was no one in the packaging industry that would have given me the guidance to how to go forward. So I was just walking in naked and seeing what's up. Wow. Yeah. Wow. If you could have dinner with one person, who would it be? I would always prefer whenever time I get, I spend with my parents. That's it. Okay, Because I'm good. always in office. Good. The most important quality in a leader is?
giving ownership, having the patience and the strength to give ownership to your team. Good. Last three. Your life motto is? Hard work and faith. Hard work and faith. Last two. The best way to show appreciation to your employees is? Is other than the appraisals and everything that you give. Yeah. You know, but just walking to them and telling them that what they've done, you could not have done. You know, the very basic answer is letting them know and realizing them that the success is because of them and not. Wow. It is a joint effort. Wow. And the final one is, the one thing that you cannot live without is? Being challenged. Oh wow. Yeah, I know. Your ability to be challenged is like matchless. Umer, thank you so much for being with us. I tell you, it was such a pleasure having with you. And this conversation, I know that the theme of this conversation is inspiring conversations. I know that many individuals, professionals जो कि कभी सोच रहे होंगे कि we should also take risk. With your story, I know that they will be inspired. I think it's a very simple route if you're willing to work hard. मेरे ख्याल से ना हमारे में पढ़ लगे मैं ना आपने पढ़ लगे. True. But 5 साल पहले हम क्या कर रहे थे और अभी I think a lot of people know us and we are doing good work. सिर्फ मेहनत करनी है. लेकिन very consistently. सुबह 9 बजे भी और रात के 1 बजे भी मेहनत करनी है. And if someone is willing to do that, I think कुछ मुश्किल नहीं. Very easy. Wow. Wow. Umer, thank you so much for being with us. Thank you. Thank you. Okay.